कंप्यूटर क्लास चली 5 रे तो 4 to 5 था ना कंप्यूटर क्लास इज इन द 4 to 5 राइट ओके एनीवे as you like. So hello everyone, I'm Sudipta Simran Ponda, welcoming you all to Vedang Civil Services powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, how are you everyone? After a long gap, I'm taking your science and tech classes. नाम तो सुना होगा, नहीं नाम तो अभी तक सुनी ही नहीं थी, अभी फिलहाल सुन रही हूँ. नाम तो सुना होगा. ओडिया क्लास केबे होची? ओडिया क्लास डेली सकाळे आपणकर 10 रु 11 रे होची. ओके चलो तो लेट न करिके स्टार्ट करिबा क्लास. आई होप ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखि दियंतु जदि आपण माने सिविल सर्विस बैच नोचंती ऑलरेडी आपणकर बैच लाइव हे जाई छि बट स्टिल हां केएफडब्ल्यू आई एम फाइन नाउ. थैंक यू फॉर आस्किंग. भल अछि. ओके हाँ सो OCS प्री जदि बैच आपण माने ओनली नोचंती 6999 जोटा थिला सेटा आपणकर ड्रॉप हे जाई छि प्राइस 5499. बहुत ही लिमिटेड टाइम पे ऑफर अछि तो आपण मान जदि याकू नेबा पाई इंटरेस्टेड अछंती देन जल्दी याकू ग्राफ करंतु. आउट ऑफ दैट जदि प्री प्लस मेंस बोथ आपण माने नेबा को चाहुचंती देन 11999 रहउची बैच प्राइस ताको आपण माने 9999 और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 10000 आपण मान ताको अवेल करि पारिबे. एंड ऑप्शनल 4999 थिला जोटा कि सबुठु गोटे बहुत ही लिस्ट प्राइस हमें कहि परिबा बट ताठु भी कम हे जाई छि 3999 रे. सो दिस आर द ऑफर प्राइस. बहुत ही लिमिटेड टाइम पे आपनकर एटा अछि अवेलेबल करि परिबे देन प्लीज. ओके चलो नेक्स्ट आपनकर कोन अछि आई एम शोइंग यू वन डे एग्जामिनेशन पे अपार्ट फ्रॉम द OCS जदि आपण माने वन डे एग्जामिनेशन पाई भी प्रिपेयर करूछंती ताहले आपण माने जे कोनोसी बैच नै परिबे. बैच प्राइस देखंतु ओल्ड प्राइस जोटा अछि 3999 महापैक रा प्राइस एंड एबे हे जाई छि ऑफर प्राइस 2999 ओनली. ओके चलो बाकी वन डे एग्जामिनेशन स्पेसिफिक बैच अछि आपण माने देखि परिबे. TGT एंड ZTB आपण माने चाहिले प्राइस ड्रॉप हेसी नै परिबे. डायरेक्ट जिबा क्वेश्चन ऊपर को. सो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. फर्स्ट कोन कहिला ना विथ रेफरेंस टू सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जदि सेमीकंडक्टर को आमे कंसीडर करिबा तार फैब्रिकेशन को कंसीडर करिबा तो व्हिच सेंटेंस विल बी द राइट वन. ओके ताहले आज 10 रे क्लास हबो मैम. डेफिनेटली हबो. 10 वाला क्लास तो मु केबे बंद भी करेनी. एट ओस्ट कंडीशन ने भी मु क्लास निए देन आपण मान को कहि दिए कि देह भल नै और व्हाटएवर बट ओस्ट कहिला ओस्ट कंडीशन ने मु केवल क्लास ऑफ करे. ओके सो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 टिके पढि दियो. स्टेटमेंट कोन कहि छि ना फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स रिक्वायर्स अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन. इज दैट ट्रू? Semiconductor fabs are capital intensive and technology intensive. So which of the statements given above is or are correct? Option 1 only, 2 only, both the option or neither of them. कौन होगा right answer? Anyone? Semiconductor fabrication को नहीं की question पचारी छी and statements दीटा अपन मन को दे छी. So को statements एठी right होगा? किछि आंसर दियो सो दैट मु देखिबी तमानकर आईडिया कोन बेसिक आईडिया एगुडा सब. देखो OCS हमें पढुचे दैट डजंट मीन कि दिस इज अ रॉकेट साइंस वी आर लर्निंग हियर. दिस इज वेरी बेसिक. एवरीवन शुड नो अबाउट इट. कोन कहूची बोथ. ओके लेट्स चेक योर आंसर. ऑप्शन सी तो एठी कोन रहिला ना बोथ आर करेक्ट. वेरी गुड KFW. ना फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स रिक्वायर्स एन एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ केमिकल purity, often referred to as a ultra pure silicon or semiconductor grade polysilicon बोली हमें कहूचे जेतेबेले extreme pure level ले semiconductor को देखुचे.
And statement 2 be correct because semiconductors fabrications plants are widely recognized as being both capital intensive and technology intensive. Both ଆପଣଙ୍କର କଣ commercially ଆମେ ତାକୁ use କରୁଛେ and technology purpose ରେ ବି use କରୁଛେ. So obviously both will be the right answer. Very good KFW. Next, मते कुह consider the following statements about India's semiconductor mission. तो इंडिया रा semiconductor mission को लेके मते कुह which statement will be the right one. The first sentence, let's read it. It aims to develop a complete semiconductor ecosystem. Is that? It includes fabrication, packaging, and testing facilities. Is that? कोटा हबा either or both or any single of them. Right answer टिके दियो KFW. कौन कहू छ यार आंसर? Semiconductor mission को देकी. It aims to develop a complete semiconductor ecosystem. It includes fabrication, packaging, and testing facilities. तो एटा भी कौन आपण मानकर both को कौन एटा भी आपण मानकर both को कहू छी कि yes confuse both हबो. Yes definitely both हबो. कारण it aims to develop a complete semiconductor ecosystem. The primary objective of the India Semiconductor Mission ISM is to foster a robust and sustainable semiconductor and display manufacturing ecosystem within the country. Right? Next sentence उते हमें देखिबा it includes fabrication, packaging and testing facilities as well. Because of the various components आमनकु सबुतरे टेस्टिंग भी करबा को पड़िबो and packaging रे भी सेति की निजको केयरफुल रहिबा को पड़िबो. So both of the sentence is right. Next इबा एबे मते कुह थर्ड क्वेश्चंस with reference to space debris. तमनकु कहितली space debris कहिले कोन बुझुचो? जेबेले space माने low earth orbit रे हमें बहुत संख्या रे सैटेलाइट लॉन्च करी दोचे तो सेते बेले एटमॉस्फेयर ऊपर को जाई की स्पेस रे तो स्टार्टिंग आपनकर लो अर्थ ऑर्बिट रहउची देन आपनकर मीडियम अर्थ ऑर्बिट देन आपनकर जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट देन आपनकर हाई अर्थ ऑर्बिट तो लो अर्थ ऑर्बिट रे आपनकर कोन होची ना स्पेस डेब्रिस क्रिएट होची दैट मींस वी कैन से कि आपन मानकर बहुत ही लेस गैप रही जाउची एल्स हमकु पूरा मापी चुपी के आउ गोटे सैटेलाइट लॉन्च करिया पूर्व ध्यान देबा को पड़िबो तो स्पेस डेब्रिस को नै कि स्टेटमेंट के रीड करो ना स्पेस डेब्रिस मेनली ओरिजिनेट्स फ्रॉम the defunct satellites माने defunctions वाला satellites and rocket stages. Space debris can damage operational satellites तो एठी भी कोन both right answer होउची कि space debris आपनकर केमिति क्रिएट हुए आइदर आपनकर बहुत संख्या रे सैटेलाइट लॉन्च होईची एल्स जो सैटेलाइट उडा आपनकर एपर्यंत इनएक्टिव कंडीशन रे स्पेस रे अछंती दे आर आल्सो इन द स्पेस वी कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम द स्पेस तो obviously space रे रहिला माने तो आपनकर डेब्रिस क्रिएट हबो गैप किछि रहिबनी आपनकर जो कहंती किछि जागा ही रहिलानी दैट मींस आपनकर एठी कोन बोथ सेंटेंस राइट हबो कि यस मैम सो द स्पेस डेब्रिस मेनली originates from defunction satellites and rocket stages. Other sources include the fragments from the collisions, explosions and anti-satellite tests. तो collision न हेबा पई explosions न हेबा पई हमकु चेक करिया को पड़िबो whether the space debris is there in the low earth orbit or that is not in the orbit. एटा हमकु चेक करी कि स्पेस रे रॉकेट लॉन्च करिवा को पड़िबो सैटेलाइट लॉन्च करिवा को पड़िबो out of that statement 2 कोन कहूची ना space debris travel at extremely high velocities up to 10 km per second. You can imagine within 1 second अपन करा 10 km जाई परिबो in the low earth orbit and even small pieces can severely damage or destroy operational satellites. जदि गोटे माने जोदरा आपनकर suppose these are your variety suppose एटा आपनकर low earth orbit कहिली then आपनकर एटा medium earth orbit कहिली suppose एठी आपनकर गोटे satellite अछि here is also another satellite तो एमाने सब moving condition रे अछंती not कि एमती static condition रे space रे रहि जाई छंती तो मूविंग कंडीशन भीतर आपण माने भाबंतु जति से माने मूव करूथिबे एंड स्पेस रे स्पेस ही नथिबो एंड हमें गोटे सैटेलाइट लॉन्च कर देले ताले जति एथरो गोटे छोटो अंशटे भी आसी के हम सैटेलाइट रे बाजला ताले टोटल हमर ऑपरेशन रो कॉस्ट जीरो हे जिवो 12 वर्ष रो तपस्या पूरा सुकुआ पुडा रे जिवो तो एई सब को हमकु रोकीबा पई स्पेस डेब्रिस को टिके हटेबा निहाती दरकार राइट नेक्स्ट कोन अछि देखो Consider the following statements regarding reusable launch vehicles. अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन कहिला. What
na reusable launch vehicle. When it is talking about the reusable launch vehicle, that means kono na आपण माने जानी थिबे कि हमरो launch vehicle हैला कहा थ्रू रे सॉरी हमारा सैटेलाइट्स हैला रॉकेट्स हैला ए सब लॉन्च होउचंदी कहा थ्रू रे ना थ्रू एनी काइंड ऑफ लॉन्च व्हीकल दैट मींस सपोज दिस इज आवर रॉकेट राइट ओके देन एठी आपनकर कोन लागि थाय दिस इज आवर रॉकेट एंड एठी आपनकर ए पर्सन थाय कोन ना लॉन्च व्हीकल जहा थ्रू रे आपनकर सैटेलाइट ता लॉन्च हबो थ्रू द स्पेस आमे ताकू कहू दैट इज द लॉन्च व्हीकल राइट तो इन दैट कंडीशन आपनकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल माने कोन कहू छे ना जते बेले आकाश को जाई की या फिर स्पेस को जाई की सैटेलाइट को लॉन्च कला पुनी व्हीकल वापस आसी जीवो हमर स्पेस जोठी हम सेंटर को आसी जीवो सेठी हमें ताकू पुन थरी रीयूज करि परिबा किछि माइनर इश्यूज थिबो हमें ताकू पुनी रीमोडिफाई करि परिबा बट इंडिया पाखरे गोटिए बोली ओनली ट्रस्टेड करा जाई छी ताकू हमें कहू छे पुष्पक तो पुष्पक बोली गोटे हेलिकॉप्टर रे आपनकर लॉन्च हेइथिला दैट इज द रियूजेबल लॉन्च व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशंस RLDS बोली हमें ता कहू छे डेमोन्स्ट्रेशंस वाला तो ए पर्यंत इलॉन मस्क यूएसए रे सेतिकी माने माने ऊपर को जाइछंती से माने डेवलप करिछंती से मानकर रिसर्च एतिके आगु को जाइछि इवन नॉट ओनली का तांकर लॉन्च व्हीकल इवन तांकर सैटेलाइट भी बुली बुली की आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स परे भी से माने पुनी वापस ताकू स्पेस माने अर्थ को आनी पारुछंती they are that much of capable but in case of India we are not that much of developed clear so reusable launch vehicles ta bujhila but ta par questions kon deichi let's read the statements na RLVS other reusable launch vehicles reduce the cost of access to space obviously jodi ame gotte jinsa ko reuse kari pariba सपोज ए पेन टा बहुत टाइम लेखिला परे ए जो पॉइंट तार अछि ए पॉइंट टा कोन हुई ना घोरी हे टिके सरी जाय सो दैट हमें माने फाइनली पुनी थारे लेखि पारेनी जदी पुनी थारे हमर कोन होबा ना जत्ते हमें लेखुतिले एटा किछि प्रॉब्लम भी होबनी ये सरी बनी देन हमें कहि परिबा कि एटा को हमें रीयूज करि परिबा ताहाले हमको किनिबा पई कॉस्ट भी कमी जिवो दैट मींस हमर कॉस्ट इफेक्टिव रहिला हमें माने प्रॉफिट रे रहिले सो हमें एटी कोन कहि परिबा ये स्टेटमेंट 1 इज राइट नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन कहिछि ना RLV टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेस लॉन्चेस ऑब्वियसली जदी हमर कॉस्ट कमी जिवो हमकु गोटे रिसर्च करिबा पई सपोज 1 मंथ लागुथिला तापर हम भाबुथुले अरे गवर्नमेंट अप्रूवल नियो फुनी से बजेट सैंक्शन हबो हमें 2000 कोटी टंका रे बजेट मागिथिबा से हमकु 1500 कोटी टंका मिलिबो या फिर 1000 कोटी टंका हमकु पुनी भाबिया को पड़िबो ताकू केमती हमें जो प्रोजेक्ट बनैथिले सेटा को पुनी केमती मिनिमाइज करके छोटो करिया को पड़िबो पुनी लाइट वेट बनैबा को पड़िबो सैटेलाइट तो एई सब थॉट हमर रहिबोनी जदी हमें रियूजेबल लॉन्च व्हीकल करिबा सो एठी भी आपनकर कोन ना बोथ तो सेंटेंस राइट हे गला ये सनो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना विथ रेफरेंस टू चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 3 मने पडुची 1 2 3 तीनटा जगह बसिया को आपन को पढिबो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट चंद्रयान 3 मिशन अकॉर्डिंग read the sentence properly and tell me what is the defective one or what is the odd one out or both are right देखो it demonstrated India's soft landing capability on the moon yes moon ro south pole le soft landing करी थिबारो first country होची हमर इंडिया yes or no yes then कौन होइछि it carried an orbiter similar to chandrayaan 2 रो similar orbiter नै कि जाइथिला कि ना yes मैम ये नै कि जाइथिला हां कि कहबा एटा ना कारण चंद्रयान 2 रे आपनकर जाइथिला विक्रम बट एठी आपनकर विक्रम नहीं सो स्टेटमेंट 2 आपनकर रॉन्ग हेई गला सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट सी ना चंद्रयान 3 did not carry a new similar orbiter instead it consisted only of a lander module that is the vikram type रा गोटे मॉड्यूल नै कि गला and a rover pragyan which were transported by a propulsion module clear so this utilized the already operational orbiter from the chandrayaan 2 mission तो ताकू कोन ना थरे रिफ्यूल करिनी माने ताकू आउ थरे रीयूज करिछि सेम टाइप रो मॉडल टाकू आ गोटे नुवा किछि बना जाइनी क्लियर नेक्स्ट चलो मते कुह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस तो एआई ऊपर एआई हमकु केति की मदद करूची या फिर एआई हमकु किछि लाइक कोन कहि परिबा हमकु हेल्प करूनी एंड हमें कहिबा ये हमकु प्रॉब्लम रे पकोची तो एआई कोन सेमती करूची की इज इट सो
Tell me, consider the following statements about the artificial intelligence. First option कहला AI governance includes ethical, legal and social considerations. Is that or AI governance is required only after widespread deployment? What will be the right answer? KFW नाम तो सुना होगा, आ गए ओडिया क्लास में पूछ लिए फिर चले गए. क्विक यार आंसर मत दियो. AI governance को नेकी what will be the right answer? Consider the following. तो obviously आपनकर कोन ना only one हबो because only one हबो because AI governance is required only after widespread deployment नहीं. AI governance starting रो आपनकर दरकार. Deployment पूर्वरु भी दरकार. Not after the deployment but also both before the deployment. Right? So कौन कहिला? Now, AI governance is required throughout the entire life cycle of the AI systems, not only after but also before. Okay, chalo next. Mate kuha, with reference to generative AI, consider the following statements. The generative AI ko consider karantu what will be the right one. Clear? The generative AI can create text, images and code. Generative AI systems cannot produce misinformation. So, कौन होगा right answer? Quick. Only one, only two, both one and two, or neither one nor two. Quick. With reference to generative AI, consider the following statements. कौन कहूची? Generative AI को? Now that is only one. See. Now, generative AI can create text, image and code, but generative AI systems cannot produce misinformation. That is true. Because generative AI systems can and do produce misinformation because AI भी आपन को misinformation provide करि पारे. आपन केते बेले देखिथिबे chat GPT रो यूज आपन जदी करूछंती in your day to day life ताहाले आपनकर कोन होउची ना किसी किसी misinformation आसी जाय किछि किछि wrong information भी आसी जाय. So that is the misinformation. Clear? Next चलो. Consider the following statements about robotics in healthcare. तो मते robotics को नेकी कहिला कोटा हबा right answer in the case of healthcare. Robotic surgery improves precision in complex procedures. Quick, consider the following statements about robotics in healthcare. What will be the right answer? Robotic surgery improves precision in complex procedures. Robotic systems eliminate the need for human doctors. Quick. So, कौन होगा इठी? Robotic surgery improve इठी कौन both? Sorry. हाँ. So, robotic surgery improve the precision in complex procedure. Yes, robotic system eliminate the need of human doctor. एमिति हेई परिबो नहीं. Robots are being made to help the human, not to replace the human. AI is being made by the human to help for the human, not to replace the human. So AI आपनकर केतेबेले replacement करूनी या फिर robotics आपनकर job exchange करूनी, job replace करूनी. से आपनको job रो कोन facilities of scope extra provide करिवो. So yes, तो इठू गोटे हबो only one. बुझी पारुछो केमिति eliminate करूछो. Next. With reference to nanomedicines, consider the following. Nanomedicines कहले that is a part of medicine that is helped by the nanoscience. Okay. Nanoparticles can be used for targeted drug delivery. Nanomedicine reduces side effects of drugs. What will be the right answer? Only one, only two. Both one and two, neither one nor two. कौन होगा right answer? With reference to nanomedicine, consider the following. Quick. Only one कहदेला. A. Only one. Nanomedicine reduces the side effects of the drugs. कौन होची right answer? Very good. Only one ही गला ना कि तो obviously आपनकर कौन होची ना both one and two. Here the nanoparticles can be used for targeted drug delivery because nanoparticles are engineered to deliver drugs precisely to specific cells, tissues or organs. And nanomedicines reduces the side effects of drug by concentrating the drug at the diseased site and minimizing its exposure to healthy tissues. Nanomedicines significantly reduces the systematic toxicity.
तो बेसिकली आपण मानकर केते को लेवल टॉक्सिसिटी बढ़ी चली ताको रिड्यूस करूची आपनकर नानो मेडिसिन्स. नेक्स्ट, consider the following statements regarding carbon capture technology. Tamate ko carbon capture technology according what will be the right answer? It aims to reduce carbon dioxide emission. CO2 ro emission को reduce करूची की carbon capture technology, or it can apply in power plants and industries, or is that so? Kaun have right answer? Only one, only two, both one and two, or neither one nor two. Anyone can? Quick answer. Consider the following statements regarding the carbon capture technology. That means ye kaun both the sentence will write. Now the fundamental aim of the carbon capture technology is reduce the prevent of carbon dioxide. That is the main aim. And carbon capture technologies are designed to be applied to large point sources of carbon dioxide emissions also. Am I clear? Chalo next. Mate kuha, with reference to biofertilizers. Kaun kahichi? Now, with reference to biofertilizers, consider the following statements. Biofertilizers contain living microorganisms. They improve soil fertility naturally. Kaun haba? With reference to biofertilizers, consider the following statements. That is both. Yes, both the right answer. Because biofertilizers contain the living organisms. Living organisms contain koruchi boli bio what use heisi. So bio means living, right? So fertilizers apan use heisi, that means the living microorganisms. They improve soil fertility. Jetebele living organisms apankara soil re rahuchandi, se soil fertility apankara naturally boost karibe soil, right? So both the sentences are right. Next question. Consider the following statements about GM crops, genetically modified crops. So according mate kuha, which sentence will be the right one? GM crops may reduce the pesticides uses, or GM crops may reduce, GM crops are regulated in India through statutory mechanisms. कौन हबो कौन एठी हमें बोथ द आंसर राइट मारी परिबा की वेरी गुड नेचर. सो एठी में हमें कहूचे बोथ, बिकॉज़ हमें जानि छे जीएम क्रॉप्स दैट इज मे रिड्यूस द पेस्टिसाइड यूजेस, बिकॉज़ जेनेटिकली किछि चेंजेस दरकार, जेनेटिकली कोन डिफेक्टिवनेस रही छि हमें ताको मॉडिफाई करी कि ही कोन रिप्रोडक्शन पे आनी थाए. सो आको एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड्स र रिक्वायरमेंट ही नाही, तो ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बूस्ट हे कि आसी थाए, राइट? So the statement is correct. After that, the GM crops are regulated in India through statutory mechanisms. Is that so? Now this statement is also correct because India has a well established and stringent statutory regulatory framework apanଙ୍କର थाए, जोथरे कि apanଙ୍କର BT cotton approval only हेisi India रे the GM crops भितरु. Okay, next. With reference to DNA vaccines, consider the following. DNA vaccines को नहीं कि मते कहिलो. Consider the following statements. कौन कहिछि ना? First of all, the DNA vaccines introduce genetic material to produce antigens. Is that so? Or DNA vaccines do not require cold chain storage to the same extent as traditional vaccines. या भितरु कोटा देखाओ. जदि गोटे फास्ट राइट होउछि देन डेफिनेटली सेकंड रॉन्ग हेजिवो. तो फास्ट कोन कहउछि टिके देखो. तो ऑप्शन आपनकर सी बोथ अछि. देखा आउथरे पढि दियो ना. DNA vaccines introduce genetically material to produce antigens. That's true. DNA vaccines do not require cold chain कथा कहछि. I'm sorry for that, I have not read properly. Okay, so DNA vaccines do not require cold chain storage because आपनकर ऑलरेडी एंटीजन से प्रोड्यूस करि पारुछि. जदि itself से एंटीजन प्रोड्यूस करि पारुछि देन कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट ही नाही. So both the statements will be the right one. Next, consider the following statements regarding the supercomputing. Supercomputing नहीं कि मते कहिलो what will be the right statement? Only one, only two, माने either one, either two, both the two या फिर neither. कौन कहिछि ना supercomputers are used in climate modeling. Is that so? Climate modeling by yes, India's Param series are indigenous developed. Very good. कौन होछि ना both the right answer. Yes, nature. Thank you.
Okay, so supercomputers are extensively used in climate modeling and weather forecasting due to their ability to handle the complex large scale simulations. SI देखिए simultaneous. Okay, simulations required to understand the Earth's climate, the systems, and the predict the weather events before the event occurred. Next मत देखो, with reference to quantum communication, consider the following statements. Quantum communication को जदि हमें consider करूछे, ठीक अछि, तो मते कुह ए सेंटेंस भितर कोटा राइट आंसर हबो. फर्स्ट सेंटेंस कोन कहूची ना, quantum communication uses principles of quantum mechanics. Is that so? Quantum communication use करूची की principles of quantum mechanics. Then अछि, it provides enhanced what? Now, it provides enhanced security compared to classical communication. So, A3 भी कौन both answer right है इसी बाकी? Yes. Because quantum communication is a fundamentally rooted in the principles of quantum mechanics. Quantum communication that particularly through quantum key distributions आपनकर occur ही था. Next. तो अगेन कहूची OCS प्री पाई जदी को माने भी इंटरेस्टेड अछंती 6999 प्राइस एबे ही जाईची 5499 एंड द टोटल होल बैच आपनकर जेटा प्री प्लस मेंस पैकेज भी ड्रॉप हे की 9999 हे जाईची एंड एनी ऑफ देम जदी आपन माने ऑप्शनल पाई भी प्रिपेयर करूछंती योर ऑप्शनल पेपर 4999 एबे 3999 हे जाईची. Next also consider the following statements about internet governance. कौन कहिछि ना, internet governance involves multiple stakeholders. Is that so? Governments are the sole decision makers in internet governance. Is that so? Which is correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Consider the following statements about the internet governance. कौन हबो? आज तो मैडम दौचंती सब आंसर बहुत मारतबो ना, सो इटी कोन हे गला ना, ओनली वन बिकॉज़ टू आपनकर रॉन्ग हे जिवो. गवर्नमेंट आर द सोल डिसीजन मेकर्स केबे हबो नाही. इंटरनेट गवर्नेंस रे आपनकर गवर्नमेंट आर सिग्निफिकेंट एक्टर्स बट दे आर नॉट द सोल डिसीजन मेकर्स इन इंटरनेट गवर्नेंस बिकॉज़ दे डिफाइनिंग द फीचर द प्रिवेलिंग इंटरनेट गवर्नेंस मॉडल इज दैट नो सिंगल एंटिटी हैज सोल कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग. बिकॉज मिनिमम दुई जना पार्टनरशिप करिकी ताकू करिया को पड़िबे. एस जो गोटे जदी कहि भी किछि भी माने कोन रॉन्ग स्टेप निया गला, रॉन्ग डिसीजन निया गला, आउ जने ताकू रेक्टिफाई करिया पई रहिबा दरकार. राइट. नेक्स्ट चलो मते को विथ रेफरेंस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ट्रेड सीक्रेट्स आर प्रोटेक्टेड विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन. मते को ट्रेड सीक्रेट सपोज आपण माने एमडीएच मसाला चलाउछंती एंड मु आपनकर एवरेस्ट चलाउछि. एवरेस्ट रा मसाला सबु तो मसाला चिकन मसाला आण से तो किछि भी चिकन मसाला आपण आनी परिबे, बट मीट मसाला आण किछि भी मीट मसाला आनिबो, गरम मसाला आण किछि भी गरम मसाला, बट टेस्ट आपनकर डिफरेंट होउछि. तो टेस्ट होउछि आपनकर ट्रेड सीक्रेट. एल्स गरम मसाला माने इंग्रेडिएंट सेम ही थिबो आपनकर एंड सेटा आपनकर लेखा है नथिबो को क्वांटिटी रो कोटा. दैट इज द ट्रेड सीक्रेट कि आपण माने सपोज आउचंदी केएफसी रे खाइबा पई, राइट, रोड साइड रे भी खाउचंदी बट टेस्ट आपनकर डिफरेंस रहउछि, हाइजीन डिफरेंस रहउछि, बट टेस्ट रे कोन कोन से मिसेई करचंदी से माने थोड़ी ना कस्टमर आगे रिवील करिवे. दैट इज द trade secret. So as the same एठी पछारची trade secrets are protected without formal registration. Without formal registration रे कोन हेई परिबो की नो ये हेई परिबोनी. So एठी only one आपनकर राइट आंसर हबो. कोन हबो ना statement 1 trade secrets are protected under patent law. Trade secret are protected under patent law हबोनी, किंतु without formal registration रे ये आपनकर हेई परिबो नाही. So एटा भूल अछि जेहेतु एटा ठीक आंसर. क्लियर. आसा देखो कोन कहूची ना, trade secrets are form of intellectual property right that are protected without formal registration. So the protection lasts as long as the information remain confidential. जे पर्यंत आपण माने आपनकर सीक्रेट मेंटेन करी कि रखुचंदी से पर्यंत आपनकर ट्रेड सीक्रेट मेंटेन हेई कि रहिला दुनिया लोक को आगको.
सपोज आपण गोटे गीत लिखिकी रखिचंती जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग इट टू यू गोटे गीत लिखिकी रखिचंती कंपोज करिकी रखिचंती लिरिक्स सब आपणकर बट आपण रिवील करबा पूर्वरु आपण सेटा गाइबा पूर्वरु मु से गीत नै गली मु गोटे अलगा धुन रे सेटा को निजे गाई की सेटा को पब्लिश करि देली जे पर्यंत आपण सीक्रेट मेंटेन करके रखी पाले सेटा आपणकर जेपे मु पब्लिश कर देली आपणक पूर्वरु सेटा मोर हे गला सो ट्रेड सीक्रेट आपण जे पर्यंत ताको केयरफुली रखी परिबे इन योर एंड दैट इज द ट्रेड सीक्रेट जेते बेले सेटा रिवील हे जिवो दैट इज नॉट योर्स एंड सेथि पई केही भी दायी नहंती देयर इज नो लीगल बाउंड्रीज इन बिटवीन दोस क्लियर चलो तो स्टेटमेंट 2 कोन कहि छी इनकरेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द पेटेंट लॉ द patents require public disclosure of the invention in exchange for a time limited exclusive right clear so trade secrets in contrast rely on the confidential and are typically protected under contract law or specific law prevailing next consider the following statements kon kahichi about the compulsory licensing mate kuo consider the following statements about compulsory licensing it can be invoked during public health emergencies it balances public interest with patent rights so ethi apankar kon both is right because compulsory licensing is a compulsory thing but jodi ethi apankar public interference kala public ra health upare katha asila tahale seta any moment apankar drop he jibo apankar patent act ku kadi ni asibo so इटार आपण माने एग्री करबा को बाध्य एंड इटा केबे हेतिला ना ट्रिप्स एग्रीमेंट रेटा मेंशन हेतिला क्लियर so compulsory licensing is a legal mechanism under the TRIPS agreement and national patent laws that allows a government to authorize a third party like a generic manufacturer to produce a patented product or process without the patent holder's consent statement 2 kon kahuchi now the fundamental principles of the compulsory licensing is to strike a balance between the private exclusive right of patent holders and the public interest and welfare also okay next chalo now with reference to cyber warfare consider the following statement cyber warfare कहले त माने कोन बुझो आइदर cyber attack हे से हमकु निजे को बंचेबार अछि हमकु निजे माने साइबर अटैक्स जने करिवो दैट इज द फिशिंग वन ताको हमकु अगेंस्ट रे जिबा को पड़िबो या फिर ताको सपोर्ट करिया को पड़िबो जदी आमे करूछे ताहाले भी साइबर अटैक जदी आमे द्वारा माने आमे सेथिरे विक्टिम प्ले करूछे ताहाले भी आमे रिस्पांसिबल फॉर दैट आमे भी सेथिरे पार्ट नउछे दैट मींस साइबर अटैक्स कैन टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर वारफेयर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिक्योरिटी चैलेंज सो कोन हबो इठी बोथ द राइट आंसर साइबर attacks can target critical infrastructure then cyber warfare is reorganized or recognized as a security challenge next mate ko consider the following statements regarding drones ko consider the following statements regarding drones so drones are used in agriculture for precision farming is that so drones are used in agriculture for precision farming is that so else achi drone regulations aim to balance innovations and security kon have right answer quick drones are used in agriculture for precision farming drone regulations aim to balance innovation so ethi bi apankar both sentence right dekha jauchi ha na nahi so drones are widely used in agriculture for precision farming applications such as the crop monitoring the targeted spraying of the pesticides and fertilizers etc statement 2 kon kahuchi na drones regulations in various jurisdictions are implemented to boost the use of drones also so that is also true ha na nahi next chala with reference to green hydrogen consider the following statements तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम जदि सामना को रखिबा कंसीडर करिबा तो स्टेटमेंट कोन कहिछि ना ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी द ग्रीन हाइड्रोजन कहला मन तो रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्वियसली इट कैन हेल्प डीकार्बोनाइज हार्ड टू कोन ना अवेट सेक्टर्स तो कोन इठी बोथ राइट आंसर हे गला
because green hydrogen means आपण मान जानी संती that is the hydrogen renewable energy सहित related. बाकी रहला green hydrogen is considered a crucial tool for the decarbonizing that is the hard to abate sector, also known as hard to electrify sectors such as the iron and steel production, chemical manufacturing, shipping and aviation etc. Okay. Next also mate को consider the following statements about battery technology. Consider the following statements about battery technology. First one is the lithium-ion batteries have high energy density. Second one is the recycling of batteries is important for resource security. कौन हमारा right answer? Battery technology को जो हमें consider करूचे एठी कौन है जाउची ना both the right one because lithium-ion batteries are widely recognized as the having a high energy density compared to the most other rechargeable battery technologies, right? Then asuchi statement 2, the recycling of batteries is important for resources security because it allows for the recovery of critical and valuable materials like lithium, cobalt and nickels too. So both the sentence ethi apankara right hi gala. Next, with reference to deepfake technology, the deepfake technology, deepfake ChatGPT, that means that related with the AI. Okay, so कौन कहिछि sentence टिके देखिबा. Deepfakes uses AI to manipulate audio visual content. Is that so? Deepfakes use AI to manipulate audio visual content, or deepfakes pose challenge to democracy and trust. तो एठी आपनकर कोन हैला ना option C कौन हैला ना both the right because deepfakes use the AI, deepfakes use artificial intelligence, especially deep learning to manipulate or generate realistic audio visual content. Statement 2 कौन कहिछि deepfakes can mislead people, spread misinformation and undermine public trust and democratic processes. Next देखो consider the following statements regarding data localization. Right? The data localization कौन कहउछि एठी आपनकु now, data localization mandates storage of data within national borders. It can have implications for cross-border data flows. कौन हमारा right answer मते कुआ ना एठी भी आपन को देखा जाउची both the sentence right because data localization is the practice of requiring data generator. हने नै मते को data generate हैला परे तो आपनकर country रे कोन ना store हेकी रहिबो process होबो या फिर आपनकर spread होबो. Right? So statement 2 कौन कहउची ना data localization requirements can significantly impact the global data flows and international business operations by creating barriers and impeding, right? Next कौन कहउची now with reference to science diplomacy consider the following statement. Science diplomacy की जदि हमें आखि आगु को रखिबा तो को statement आपनकर wrong हबो या फिर right हबो मते को फर्स्ट कौन कहिछि देखो सॉरी देखि देला आंसर स्टिल को देखिबा कोन कहउछ ना साइंस कोऑपरेशन can help address global challenges. Science diplomacy is limited to space exploration. देखो साइंस डिप्लोमेसी तो केते बेले लिमिटेड नुह साइंस डिप्लोमेसी आपनकर वेरियस जगह यूज हेई पारुची सो इट ओनली वन हे गला राइट आंसर. देखो कोन कहउची ना साइंस कोऑपरेशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ साइंस डिप्लोमेसी एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड. जदि वाइडली हैला ताहले इटा ओनली स्पेस जगह लिमिट केमिदी हबो हबनी ना. नेक्स्ट को मते consider the following statements about wearable technology. Consider the following statements about wearable technology. That means हमें जदि स्मार्ट वॉच पिंदुचे हमें ब्लूटूथ पकोचे हमें ईयरबड्स यूज कोचे these all are the wearable technologies, right? So wearable can monitor health parameters. Yes, that can monitor. Wearable raise concerns related to the data privacy. Data privacy को नेकी आपनकर concerns अछि तो no. So wearable that is connected with Bluetooth. So अपन जति की approval देबा से हमर सेति की कोन प्राइवेट जिंस को यूज करि परिबो. जदि हमें कैमरा एक्सेस देबानी नबनी contact access देबानी नबनी message access देबानी से भी access करि परिबो नै तो हम ऊपर डिपेंड करे that can be done by manually. So it is not true. Okay, clear? So wearable technology collect large amounts of sensitive personal and health data which raises significant concerns regarding the data privacy. Next मते को with reference to biotechnology startups in India. First कौन कहला ना they
contribute to innovation in healthcare and agriculture. Is that so? Kuh mate. With reference to biotechnology startups in India, कौन कहिछि ना they contribute to innovations in healthcare and agriculture. Government supports plays a role in scaling biotech startups. Quick right answer. Only one, only two, both one and two, or neither one and two. Option C, both one and two. Wow, great. So they contribute to innovations in healthcare and agriculture biotechnology in India that plays a vital role in various sectors. And two, government supports a plays role in scaling biotech startups also. Next कौन कहिछि consider the following statements about autonomous vehicles. Autonomous vehicles एभी ऊपर आपनकर कोन आइडियाज अछि. Autonomous vehicles rely on sensors and AI algorithms. Automation आसी वाला माने automatically किछ हबो जदी without help of AI, without help of IoT and ML बिना ये हेई परिबो नाही. Right? So obviously आपनकर AI दरकार. Autonomous vehicles eliminate all road accident. एटा केमति हेई परिबो? रोड एक्सीडेंट कौन ऑटोनोमस से अधिक एक्सीडेंट करे भी पारे because we cannot completely trust on the autonomous vehicles nowadays. While AVS are designed with the goal of significantly reducing the accidents caused by the human error, but they do not eliminate all road accident. যদি complete road accident कहिबा they cannot do that. So it only one he gala right answer. Next कौन कहूची देखो. Now with reference to ethical issues in biotechnology, तो biotechnology को जति आपण कंसीडर करूछंती कोन कहउछंती ना फास्ट जीन एडिटिंग रेजेस एथिकल कंसर्न. जीन एडिटिंग जति आपण माने एडिट करिबा पॉसिबल हेई परंता इंडिया रे अप्रूवल मिली जाता, वर्ल्ड रे सब कंट्री रे अप्रूवल मिली जाता, ताहले आमे चाहिले काहा को अंबानी कर भी जीन एडिटिंग करी के आमे पूरा डिटो क्लोनिंग मेथड को अप्लाई करि परंते. गोटे न्यू अंबानी आमे तयारी कर परंते. आमे चाहिबा जति जेम्स वेस्ट को भी आमे तांकर जीन क्लोनिंग करि परंते, इवन बिल गेट्स कर भी करि परंते. सो दैट इज नॉट अ बिग डील. जदि हमें परमिशन मिलिबो सब किछि पॉसिबल, बट एथिकल रिव्यू मेकानिजम्स आर नेसेसरी. सो दैट्स ट्रू, दैट्स नेसेसरी. सो एठी कोन बोथ हे गला राइट आंसर, बिकॉज़ जीन एडिटिंग does indeed raise significant ethical concerns such as the potential for creating designer babies, safety issues like the off target. After that, last question कौन कहूची देखो. Consider the following statements about technology and governance. The technology and governance को देखो कौन कहूची first sentence ना technology can improve service delivery. Technology adoption requires institutional capacity. So what will be the right one? One, two, or both? That is both the right answer, because the continuous growth and rapid diffusion of information and communication technologies have helped many governments innovate and revitalize public service to leverage. And technology adoption, especially for complex systems like e-participations of AI in the public sector, requires a comprehensive understanding of the complex. Clear? So both it is right answer. End of the session, but still आउ थरे कहूची जो माने भी प्री पाई प्रिपेयर ओनली करिबा को चाहउचंदी 5499 ड्रॉप हे जाईची. एंड जदी बोथ पाई प्री प्लस मेंस पे आपण माने प्रिपरेशन करिबा को चाहउचंदी 9999 हे जाईची. एंड जदी ओनली आपण माने मेंस पाई करूचंदी ऑप्शनल पेपर ओनली, ऑप्शनल पेपर 3999. वन डे एग्जामिनेशन प्राइस ड्रॉप हे जाईची. महापैक 2999 रे अवेल करि परिबे. टीचिंग एग्जामिनेशन टीजीटी आपण माने 1299 ने एंड जेटी जूनियर टीचर आपण माने 999 ने अवेल करि पारिबे. बाकी रहिला ए क्लास रो पीडीएफ आपण माने टेलीग्राम चैनल रहिछि. एटा होछि वेदांग सिविल सर्विस रो टेलीग्राम चैनल. आपण माने स्कैन करि के जॉइन होंतु. क्लास एंड रे आपण कर सेठी पोस्ट हे जाउछि. थैंक यू सो मच गाइस. हैव ए गुड डे. होप आपण माने का प्रिपरेशन भलो रहू. आपण माने भलो से प्रिपरेशन करंतु. ठीक अछि. Thank you so much. Have a good day. Take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. They should be your first priority. No one else in the world. Thank you. Have a good day. Bye bye. देखा अब पुणी राति 10टा क्लास.